is this festival of Damodar. तो बहुत ही शुभ महीना है, लेकिन इस पूरे महीने में सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव जो होता है वो है दामोदर भगवान के गोवर्धन। Govardhan Puja is one day. Diwali is one day. Janmashtami was only one day. Gaur Purnima, Holi is also one day. But this Damodar Leela, this Damodar festival, every day for the whole month. तो आप देख सकते हैं कि गोवर्धन पूजा एक दिन के लिए, जन्माष्टमी भी एक दिन के लिए, गौर पूर्णिमा भी एक दिन के लिए, लेकिन ये दामोदर महोत्सव पूरे महीने के लिए बनाया है। Yeah, we make it a habit. We do it every day for 1 month. You sing the Damodarastikam song every day, and you offer the lamp every day. You develop a very good habit to remember Krishna. तो इस प्रकार से हम ये एक आदत बना लेते हैं। अगर हम हर रोज दामोदर अष्टकम गाएंगे और टीका दिया दिखाएंगे तो एक आदत बन जाती है। The Shastra say, Smartavyam Satatam Vishnu Vishmartavya na Jatu Krit Sarve Vidina Sedashor Etayor Eva Kinkara. Shastra is telling us the most important principle over all principles is to always remember Krishna or Vishnu and never forget. तो शास्त्र हमें श्लोक के माध्यम से बताता है, जो मतलब है सततम विष्णु। श्लोक के माध्यम से शास्त्र बताता है कि सभी सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी उनको भूलो नहीं। So this month of Damodar is an opportunity for us to practice increasing our remembrance of Lord Krishna. तो ये दामोदर महीना है कि हमें एक अवसर देता है अभ्यास करने का कि हम भगवान कृष्ण का अधिक स्मरण करें। Now this Leela of Damodar takes place when Krishna is a very young child. तो ये दामोदर लीला भगवान की तब होती है जब कृष्ण बहुत ही छोटे बच्चे की उम्र में। And it's the Leela which between Mother Yashoda and Lord Krishna. ये लीला है माँ यशोदा और कृष्ण के बीच में। Now sometimes people are puzzled that they thought Devaki is the mother of Krishna. How is it Yashoda is the mother of Krishna? कभी कभी लोग भ्रमित होते हैं, वो कहते हैं हमें लगता था कि देवकी कृष्ण की माँ है, तो कैसे कहते हैं कि यशोदा कृष्ण की माँ है। So Lord Krishna appeared in Mathura, the child of Vasudeva and Devaki. But by the arrangement of Yoga Maya, Vasudeva was able to come out from that prison of Kamsa and bring the child over to Nanda Maharaj's home in Gokul. तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव तो हुआ था मथुरा में कारागार में वसुदेव और देवकी के पास, परंतु भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा ये संभव हुआ कि वसुदेव कारागार से कृष्ण को निकालकर नंदमाला की यशोदा के घर ले जा पाया गोकुल। Mother Yashoda had also delivered a child. At the same time Krishna appeared in Mathura, Nanda Maharaj's wife Yashoda had also delivered a child in Gokul. तो जब वसुदेव की पत्नी देवकी ने बच्चे को जन्म दिया था, उसी समय माँ यशोदा ने भी नंद महाराज के घर गोकुल में एक लड़की को जन्म दिया। So it's the middle of the night, everyone was asleep. And Mother Yashoda is also asleep. She's tired after the labor to give birth. So Vasudev comes to Gokul and he changes the child. He puts his son there and he takes away the baby born to Yashoda. तो रात का समय था, माँ यशोदा भी जन्म देने के बाद थकी हुई थी, सोई हुई थी। तो उस समय वसुदेव आते हैं, वो कारागार से कृष्ण को लेके आते हैं और माँ यशोदा के वहाँ रख देते हैं और उनको जो पुत्री जन्मी थी उसको लेके जाके वहाँ बदल कर देते हैं। And then Vasudev goes back to Mathura and he's back in the prison, in Kamsa's prison. And the next morning Kamsa comes and he wants to kill that child. तो वसुदेव वापस आ जाते हैं कंसा की कारागार में उस लड़की को लेके, और दूसरे दिन सुबह कंसा वहाँ आते हैं और उस बच्ची को मारना चाहते हैं। But he tried to kill it, but he couldn't kill it because child was a demigod. She rose up in the sky in the form of a demigod. तो बच्ची को मारना चाहते हैं परंतु मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो साधारण बच्ची नहीं, वो एक देवी
देवी रूप दिखाती है उसका। And that child is worshipped in the Vindhya hills, often worshipped as Durga or Amba or Kali. तो वही बच्ची की विंध्या पर्वतों में पूजा की जाती है, दुर्गा की तरह, कली की तरह। And Mother Yashoda, her child is that child who was brought by Vasudeva, that's Lord Krishna. So Lord Krishna grew up in the home of Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj is a Vaishya. He has 9 lakh cows there. तो इस प्रकार जो बच्चा माँ यशोदा के पास ले आया गया वो कृष्ण, और कृष्णा पले बड़े माँ यशोदा के घर में और नंद महाराज के घर में, और वो वैश्या है उसके पास 9 लाख गाय। And Balarama was the 7th child in the womb of Vasudeva and Devaki. और बलराम जो थे वो 7वें संतान थे वसुदेव और देवकी। But that child got transferred by the power of Yoga Maya, was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. परंतु वो बच्चे को स्थानांतरित किया गया, वो देवकी के गर्भ से माँ रोहिणी के गर्भ। Vasudeva had several wives. वसुदेव की कई पत्नियां थी। Rohini and Devaki they were the principal wives. रोहिणी और देवकी मुख्य। So Lord Balaram changed from the womb of Devaki to the womb of Rohini. And Rohini, she was staying in the home of Nanda Maharaj in Gokul. इस प्रकार बलराम का स्थानांतरित किया गया श्री बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ, और रोहिणी गोकुल में नंद महाराज के घर में रहती। So in this way, Krishna and Balaram grew up together in Gokul in the home of Nanda Maharaj. तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम एक साथ पले बढ़े गोकुल में नंद महाराज के घर। Lord Krishna's life, the childhood is in 3 stages. First is Kumar, and then Poganda, and then Kishore. तो भगवान कृष्ण का बचपन के 3 भाग हैं, कुमार, पौगंडा और किशोर। Now usually, first 5 years is Kumar life for the child, up to 5. Whereas child is with the mother all the time, very dependent on the mother. तो आमतौर पे जो कुमार अवस्था होती है बच्चे की 5 साल तक होती है, उस समय बच्चा घर में होता है और पूरी तरह माँ पर निर्भर होता है। And then by the 5 to 10, child has grown up a bit. Just like here, send the children to school, right? When they're 5 to 10, they're starting to get education. Maybe they're going to school, something. Lord Krishna, when he was between 5 and 10, he was taking care of the calf. तो फिर पौगंडा अवस्था होती है 5 साल से 10 साल के बीच में, जब बच्चा थोड़ा बाहर जाता है। हम साधारण तौर पर भी देखते हैं इस समय बच्चे विद्यालय घर से बाहर निकल के जाने लगते हैं 5 से 10 के बीच। तो जब कृष्ण की ये इस भाग में थे अपने बचपन के, तब वो बछड़ों की देखभाल करते। Lord Krishna grew up as a cowherd boy. Balarama also, together, they would take care of the calves when they were small, between the age of 5 and 10. Then when they come to Kaishore, then 10 to 15, they're given the cows to take care of. तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम 5 से 10 साल की उम्र के बीच में बछड़ों की देखभाल करते थे। तो जब 10 साल से 15 साल की उम्र थी, उसमें उनको बछड़ों को छोड़ के पूरी गाय दी गई थी देखभाल करने। We just celebrated Gopastami a few days back. Gopastami is the day when Krishna changes from taking care of the calf, take care of the cows. कुछ दिन पहले हम लोगों ने गोपाष्टमी मनाई। गोपाष्टमी वो दिन है जब कृष्णा को बछड़ों की देखभाल से निकालकर गाय की देखभाल दे दी गई। Taking care of them means take them to the forest every day. Braja, the 12 forests in Vrindavan. And Krishna would take the cows into the forest. And in the forest they would get so many grass there to eat, so many roots and herbs, and they can also drink the water from the Yamuna. तो गाय की देखभाल करना मतलब उनके वन में ले जाना चराने के लिए। तो इस प्रकार वृंदावन में 12 वन भगवान में ले जाते थे, और वन में जाने के लिए मतलब उन्हें अच्छा घास मिलेगा
और माँ यमुना का पानी मिलेगी। How many of you keep cows? आप में से कौन है जो गाय रखते हैं? Yes? You got a cow? How many cows? One cow in India. One cow in India. Very good. One cow. You're the only wealthy man here. आप ही एकमात्र अमीर व्यक्ति हो गए। Yes. Cows are very dear to Lord Krishna. We say, Namo Brahmana Devaya. Yes. So the go means the cow, and the Brahmana, cows and the Brahmanas, they're dear to Lord Krishna. तो भगवान को गाय बहुत प्रिय है। हम लोग कहते हैं नमो ब्राह्मण वो ब्राह्मण, तो गाय और ब्राह्मण दोनों भगवान को बहुत प्रिय। But when Krishna is very small, before 5, he's very small child, he's with the mother, he's at home. And this pastime, Damodara Leela, this takes place at that time when Krishna is still a small boy, just started crawling, walking around a little bit. तो ये लीला भगवान की उस समय होती है जब भगवान घर पे है माँ यशोदा के साथ, छोटे बच्चे हैं, बस अभी थोड़ा बहुत चल नहीं रहे हैं, इधर उधर ऐसे देखते हुए जमीन पे जाते हैं। So as a little child, you know, we do a festival, we have a thing when the child grows up into Annaprashna. You give the grains, it's one of the samskars, the first grains. तो छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, हम एक उत्सव मनाते हैं, वो कहते हैं अन्नप्रश्न, पहली बार उसको अन्न खिलाते हैं। Lord Krishna was still taking the mother's milk. He was enjoying the breast milk of his mother. That's the best for the child, to keep the child healthy. The longer they can drink the breast milk of the mother, the healthier they'll be. तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के स्तन का दूध पीते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जितनी ज्यादा समय तक बच्चा माँ के स्तन का दूध पीता है, उतना ज्यादा स्वस्थ रहता है। So Lord Krishna would enjoy to drink Mother Yashoda's milk. Yashoda. Yashoda means one who gives fame, one who brings fame. Lord Krishna brings fame to Mother Yashoda. तो माँ यशोदा का दूध पीने में कृष्णा आनंद उठाते थे। तो यशोदा मतलब जिसको यश मिलता है, कृष्णा माँ यशोदा के लिए यश देते हैं। Mother Yashoda is a very special lady. She's a very great devotee, and she's always the mother of Krishna. माँ यशोदा एक बहुत विशेष महिला है, वो महिला है भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, और हमेशा वो ही भगवान की माता बनती है। Devaki, she had Krishna in her womb, and then she gave birth to Krishna. But after he's born, as soon as he comes from the womb, then they take him to Nanda Maharaj. तो देवकी ने कृष्ण को जन्म तो दिया, लेकिन जैसे ही सूरज उनका जन्म हो गया, तो नंद महाराज उनको लेके चले गए, वसुदेव उनको लेके चले गए। So Mother Devaki, she didn't see the childhood Leela of Krishna. तो देवकी भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाएं नहीं देख पाई। Yashoda is enjoying all that. यशोदा वो लीलाओं का आनंद ले रही थी। Lord Krishna would enjoy to be with Mother Yashoda. She loves him so much. She would take very good care of him. And she had special cows who were giving the best milk. And she would keep that milk separate just to give to Krishna. तो माँ यशोदा कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, तो पूरा देखभाल करती थी। तो उनके पास बहुत विशेष कोई गाय थी, और उससे जो दूध मिलता था वो कृष्ण के लिए रखती थी। She had some cows. She was just feeding them lotus flowers, and they were giving very sweet milk. तो उनके पास कोई गाय थी जिनको कमल का फूल खिलाती थी, वो बहुत मीठा दूध देती थी। Some time back I went to Nathdwara. Have you been to Nathdwara? You know Nathdwara? Yeah? So Srinathji is there. And there are many artists, they paint the picture of Srinathji. And one artist, he told me,
to paint the yellow dhoti of Krishna, to paint that yellow color of Krishna's dhoti, they will feed the cow mango leaf. They will only give it the leaf from the mango tree. And then after it's been eating mango leaves for a month or more, then they'll get the urine from that cow, and they'll use that urine to make the color of Krishna's dhoti. तो कुछ समय पहले मैं नाथद्वारा गया हुआ था, जैसे कई नाथद्वारा को जानते होंगे, वहाँ श्रीनाथ जी भगवान है। तो वहाँ जो चित्रकार है वो कहते हैं कि जब वो कृष्ण का चित्र बनाते हैं तो जब कृष्ण की धोती को रंगने का समय आता है तो वो काफी समय तक गाय को केवल आम का पत्ता खिलाते हैं और इस प्रकार वो आम का पत्ता खाते खाते फिर जब वो गाय का पेशाब निकलता है उससे वो रंग से कृष्ण की धोती का रंग। So Mother Yashoda, she had a group of cows which were giving the best milk, and she would give them the best grass, and she would keep that milk to give to her child Krishna. तो माँ यशोदा को कुछ विशेष गायें थी जिन्हें वो बहुत विशेष घास खिलाती थी और वो घास खाने के बाद जो दूध देती थी बहुत विशेष, उस दूध को वो कृष्ण के लिए रखती थी। One of the reasons why she wants to give the best milk to her, first of all, Krishna is her son and she loves him very much, so she wants to give the best food. एक कारण वो कृष्ण को ये सबसे अच्छा दूध देना चाहती है वो ये है कि कृष्ण उनका पुत्र है, वो उससे प्रेम करती है, इसलिए वो उसको सबसे उत्तम दूध देना चाहती है। The second reason is she's worried that Krishna may go to the neighbors and steal the butter or steal the milk from the neighbors. दूसरा कारण है कि वो डरती है कि कृष्ण पड़ोसियों के घर जाएगा और वहाँ से पंखा इत्यादि चोरी करेगा। So she should have very nice milk. She should give very good milk to Krishna so that he won't go and bother the neighbors. तो कृष्ण को बहुत अच्छा दूध देना चाहिए, तो जब ऐसा होगा तो पड़ोसियों के वहाँ चोरी नहीं करेगा। And the third reason is she wants to offer the milk to Lord Narayan. और तीसरा कारण है कि वो दूध भगवान नारायण को भोग चढ़ाना चाहती है। And she knows that she'll give the prasad to her baby Krishna. और फिर वो जानती है वो प्रसाद कृष्ण को देगी। So Mother Yashoda had that milk. She's cooking the milk. She has to cook the milk to make the yogurt, to make the butter, to make the... So she has the milk on the stove, and at the same time Krishna came and he wants to drink her breast milk. तो इस प्रकार से माँ कृष्ण वो दूध को रखी है चूल्हे पर कृष्ण के लिए बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उसी समय कृष्ण वहाँ आता है और उसके माँ के स्तन का दूध पीना है। So Mother Yashoda picks up baby Krishna and she's feeding Krishna, but then she remembers the milk is on the stove and the milk is going to boil over. It's all going to boil over. She's going to lose all the milk. तो माँ यशोदा इस प्रकार बच्चे कृष्ण को दूध पिला रही है, फिर उनको स्मरण आता है कि दूध तो वहाँ चूल्हे पे पड़ा हुआ है, तो चूल्हे में से दूध उबल के गिर जाएगा और पूरा दूध का नाश हो जाएगा। So what to do? Mother Yashoda puts down Krishna and she goes running over to take care of the milk. तो क्या करें? तो माँ यशोदा कृष्ण को नीचे उतारती है और दूध को देखने जाती है। So Lord Krishna is not happy. He was not finished drinking her milk, and Mother Yashoda had put him down. तो भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्होंने माँ का दूध पीना पूरा ही नहीं किया था और माँ ने उसको नीचे उतार दिया। So Lord Krishna is playing the part of a child, and we know little children sometimes they don't get what they want, they get angry. तो भगवान कृष्ण यहाँ एक छोटे बालक की भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें पता है जब छोटे बच्चे को कुछ नहीं मिलता है तो उसको गुस्सा आता है। Lord Krishna is thinking, why she's bothering about that milk? She should be taking care of me. भगवान कृष्ण सोच रहे हैं क्यों मेरी माँ वो दूध के लिए पीछे पड़ी है, उसको मेरी देखभाल करनी चाहिए। Was Mother Yashoda wrong? क्या माँ यशोदा गलत थी? No, because Mother Yashoda is taking care of the milk because she knows this milk is to give to Krishna. तो
माँ यशोदा उस दूध का ख्याल कर रही है कि वो जानती है वो दूध है कृष्ण को देने के लिए। It wasn't she was neglecting Krishna, she wants to take care of Krishna. ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण का ध्यान नहीं दे रही थी, उनको कृष्ण की देखभाल करनी थी। So she put down Krishna. But Krishna was upset and he thought, I'll get my revenge. And Krishna took the pot which Mother Yashoda had been churning the butter. He took the pot and he broke it. तो कृष्णा को गुस्सा आया, उन्होंने सोचा मैं बदला लूंगा। तो जिस मटके में माँ यशोदा मंथन कर रही थी, कृष्णा ने पत्थर लिया और उसको तोड़ दिया। He broke it very carefully, without making a lot of noise. He broke it. Mother Yashoda didn't hear what was happening. कृष्ण ने बहुत शांति से मटके को तोड़ा, बहुत अच्छे से, कुछ आवाज नहीं किया, तो माँ यशोदा को पता नहीं पड़ा क्या हुआ। And so all the yogurt butter ran out. Krishna's happy, he's laughing, he's thinking, this will teach her not to neglect me. पूरा मक्खन और दही उधर से बह रही है और कृष्णा बहुत खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं अब मेरी माँ सीख जाएगी कि मेरे को ऐसे बिना ध्यान दिए चली नहीं जाए। Mother Yashoda is taking care of the milk. When she comes back, she finds Krishna's not there, he's gone away. But she sees the pot of her churning pot is all broken. तो माँ यशोदा जब वापस आती है कृष्ण के लिए, वो दूध के पास जाके वापस आती है, वो देखती है कृष्णा नहीं है, चला गया और जो मटका है वो टूटा पड़ा है। The butter and the all on the floor, and she can see also Krishna's footprints in the butter. तो पूरा मक्खन इत्यादि जो है वो जमीन पे है और कृष्ण के पदचिन्ह देखती है मक्खन में। So she knows this is my son. He's the king of thieves. तो जानती है ये मेरा बेटा है, ये चोरों का राजा है। And she says he's a little monkey. वो कहती है ये छोटा सा बंदर है। And when Krishna hears his mother say like that, Krishna tells his mother, well, if I'm a monkey, then I'll go and live in the forest. तो जब कृष्ण अपनी माँ को ये बोलते हुए सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप कहती हो कि मैं बंदर हूँ, तो मैं वन में जाके रह लूंगा। But Mother Yashoda doesn't want Krishna to go and live in the forest. परंतु माँ यशोदा नहीं चाहती कि कृष्ण वन में जाके रहे। So that's one reason why Krishna got tied up. ये एक कारण है क्यों कृष्णा बांधे गए। But before Mother Yashoda could tie up Krishna, she had to catch Krishna because Krishna was running away. परंतु माँ यशोदा कृष्ण को बांध पाए, उसके पहले उसको कृष्ण को पकड़ना था क्योंकि कृष्ण भागे जा रहा था। And Mother Yashoda is carrying her stick for churning the butter. और माँ यशोदा के हाथ में वो डंडी है जिससे वो मंथन करती है। And he sees his mother coming after him, and he never saw her with a stick in her hand before. And he knows he's broken the churning pot. He knows he's done a lot of bad things, so he's very afraid. तो कृष्ण ये देख रहे हैं और उन्होंने कभी अपनी माँ को ऐसे डंडी लेके भागते हुए पहले नहीं देखा है और वो जानते हैं कि उन्होंने ये उत्पात मचाया, इसलिए वो उनके पीछे पड़ी है, तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। Mother Yashoda is coming. Where are you? Where are you, you monkey? You king of thieves, come back! माँ यशोदा पीछे जा रही है, कहाँ है तू, कहाँ है तू, ओ बंदर, ओ चोरों के राजा, वापस आ जाओ। And Krishna said, no, I'm not coming back. She says, why not? He said, because you've got that stick in your hand, I'm not coming back. तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। तो माँ यशोदा बोलती है क्यों नहीं? जो बोलते हैं आपके हाथ में ये डंडी है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा वापस। You want me to come back? You put down that stick. आप चाहते हो मैं वापस आऊँ तो वो डंडे को छोड़ दो। So sometimes Prabhupada said, you can show the stick, but you don't use it. तो कभी-कभी श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, आप डंडी दिखा सकते हो, लेकिन उसका उपयोग नहीं करो। Prabhupada was telling to the teachers in the school that you can show the stick, but you cannot use it. प्रभुपाद गुरुकुल के शिक्षकों को बोलते थे,
डंडा दिखा सकते हो लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। So Mother Yashoda, of course, she loves Krishna. She's not going to beat Krishna. माँ यशोदा बिल्कुल कृष्ण से प्रेम करती है तो उसे मारेंगी नहीं। Mother Yashoda is always thinking of Krishna as her child. She doesn't think of Krishna as God. माँ यशोदा हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रही है उसके बच्चे की तरह, उसको भगवान नहीं सोचती। Even when she sees her son pick up the Govardhan hill, Mother Yashoda doesn't think Krishna is doing it. She thinks it must be my husband. जब माँ यशोदा देखती है कि कृष्ण गोवर्धन उठा रहा है, तभी वो नहीं सोचती है कि वो भगवान है, सोचती नहीं मेरा पति उठा रहा है। So Mother Yashoda only thinks of Krishna as her child. And mother always wants to protect the child. Anything happens to the child, mother is worried that she wants to protect the child. माँ यशोदा कृष्ण को अपने बच्चे की तरह सोचती है और इसलिए बच्चे के लिए हमेशा चिंतित रहती है। बच्चे को कुछ भी होता है तो माँ अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहती है। When Krishna killed Putana in the very beginning, when he's a very small baby, the witch Putana came and Krishna killed her. Mother Yashoda wanted to protect Krishna. जब पहले कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई और कृष्ण ने पूतना को मार दिया, उस समय भी माँ यशोदा कृष्ण को की रक्षा करना चाहती थी। So that is the nature of Vatsalyara, to be the parent, to think of Krishna as your child. You want to protect Krishna. तो ये स्वभाव है वात्सल्य रस का। हम कृष्ण को वो भक्त अपने आप को कृष्ण का माता पिता समझता है और कृष्ण को अपना बच्चा, तो कृष्ण को सुरक्षा देना चाहता है। Mother Yashoda is always cooking, making something for nice dishes for Krishna. माँ यशोदा हमेशा कुछ न कुछ पका रही है अच्छे व्यंजन कृष्ण के लिए। Sometimes making flower garlands to decorate Krishna. कभी कभी वो फूलों की माला बना रही है कृष्ण को सजाने के लिए। And sometimes making jewelry to put on Krishna. कभी कभी वो गहने बना रही है कृष्ण को पहनाने के लिए। And always thinking how to protect her child. और हमेशा सोच रही है कैसे मेरे बच्चे की सुरक्षा करें। So she didn't want her child to run away. She thought he may go into the neighbor's garden. So she thought, I will tie him up to keep him in our yard, so he doesn't go to another person's garden. तो वो सोच रही थी अगर मैं कृष्ण को छोड़ दूंगी वो पड़ोसियों के आंगन में फिर चला जाएगा, तो अपने आंगन में उसको बांध के रखती हूँ, तो ऐसे करने से वो पड़ोसियों के वहाँ नहीं जा पाती। If he would go into other people's garden, it may give trouble to the neighbors. So Mother Yashoda wanted to keep him in her place. तो सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये पड़ोसियों के आंगन में जाके कुछ बात करेगा, तो माँ यशोदा वो नहीं चाहती है, तो सोचती है मैं इसको इधर ही बांध। But then when Mother Yashoda tried to tie Krishna, the rope was never long enough. परंतु जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास की तो रस्सी लंबी उतनी नहीं होती थी कि वो बंध जाए। And she got more rope, but still wasn't enough. वो और रस्सी लेके आई, फिर भी काफी। She collected all the rope in Raja, put them all together, still somehow was always just not enough to bind up Krishna. उसने ब्रज में जितनी रस्सी थी पूरी इकट्ठा कर ली, एक साथ ले आई, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं थी कृष्ण को बांधने के लिए। Great yogis are always trying to capture Krishna, but they can never even touch the lotus feet of Krishna. बड़े बड़े योगी हमेशा कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण के चरण को छू तक नहीं सकते। Said even if you travel at the speed of the mind, you cannot overtake Krishna. कहा गया है अगर आप मन की गति जितनी तेज है उतनी तेजी से भी अगर आप चल सको तो भी आप कृष्ण तक नहीं पहुंच सकोगे। Think how fast the mind can travel. सोचो मन कितना तेजी से चल सकता है। Right? You think of Los Angeles, immediately you're there. Now Los Angeles. आप लॉस एंजलिस के बारे में सोचो, तुरंत लॉस एंजलिस में हो। Or you think of Badarik Ashram. या आप बद्रिक आश्रम के बारे में सोचो, Immediately you can be there. तुरंत आप वहाँ हो सकते हैं। The mind travels so fast. मन बहुत तेजी से भागता है।
But still it's not enough to approach the Supreme Personality. फिर भी वो काफी नहीं है परम पुरुषोत्तम भगवान का संपर्क करने की. But Mother Yashoda, she could capture Krishna because of her devotion. परंतु माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ सकती है अपने भक्ति के काम. So it's only by devotion you can come to Krishna. तो केवल भक्ति से आप कृष्ण के पास आ सकते हैं. Krishna is Bhakta Vatsal. He is not Karma Vatsal or Jnana Vatsal. He is Bhakta Vatsal. कृष्ण भक्त वत्सल है. वो कर्म वत्सल है या ज्ञान वत्सल नहीं, वो भक्त वत्सल है. It's not by karma or jnana that you can know Krishna. Only by devotion. तो कर्म और ज्ञान से आप कृष्ण को नहीं जान सकते, केवल भक्ति से. Mother Yashoda, she has that devotion. माँ यशोदा को वो भक्ति. So she was able to tie up Krishna. तो वो कृष्ण को बांध सके. And then Krishna uses, when he's tied up, he's able to pull over the two trees and to deliver the two sons of Kubera. तो जब कृष्ण इस प्रकार बंधे और वो उन दो पेड़ों को उखाड़ सके और जो कुबेर के दो पुत्र हैं उनका उद्धार कर दिए. Kubera had two sons. Kubera is the treasurer of the demigods. He's a rich man, very wealthy demigod, in charge of all the wealth of the demigods. So his two sons got affected by the wealth of their father. तो कुबेर को दो पुत्र थे और कुबेर बहुत धनी है, वो देवी देवता की खजांची, बहुत अमीर आदमी. तो उनके धन के कारण उनके दो पुत्र बिगड़ गए. Wealth, too much wealth is always a problem. धन, बहुत ज्यादा धन हमेशा समस्या है. So even you're in the heavenly planets, you're the son of Kubera, it's very dangerous. तो अगर आप स्वर्गीय लोक में हो और कुबेर के पुत्र हो तो बहुत खतरनाक. So we try to gather up all the extra wealth to use it for the service of Krishna. तो हम हमेशा प्रयास करते हैं जो अधिक धन है उसको इकट्ठा करें और कृष्ण की सेवा में लगाएं. We see how people use all their wealth, they buy all these cars and they buy these luxury apartments. तो हम देखते हैं किस प्रकार लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, वो ये सब गाड़ियां लेते हैं, बहुत महंगे घर लेते हैं. Then they have so many headaches, this car, that apartment, how to maintain them, how to keep them nice. फिर उनको बहुत सर दर्द होता है, ये गाड़ी, ये घर, कैसे इसको अच्छे से बना के रखें. So we come to collect all that wealth to use it to build nice temples for Krishna. तो हम आते हैं वो सब धन इकट्ठा करने के लिए ताकि हम उसको कृष्ण के मंदिर के कार्य में लगा दें. Then we have the headache. फिर हमको सर दर्द है. How to maintain the temple. फिर हम मंदिर कैसे बनाए रखें. So Lord Krishna delivered these two boys. They become trees by the curse of Narad. But Lord Krishna knocked over the trees and the two boys were delivered from the trees. तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इन दोनों का उद्धार किया. ये दोनों वृक्ष बन गए थे नारद मुनि के श्राप से. तो भगवान कृष्ण ने उन दोनों पेड़ों को गिरा दिया और उनका उद्धार किया. And in this way they could go back to heaven and be devotees. और इस तरीके से ये दोनों वापस स्वर्ग लोग जा सके और वहाँ भक्त बन सके. So during this month, every day we're singing this song, Damodara has to come. We're offering the light. We want to please the Lord. तो इस पूरे महीने हम ये गीत गाते हैं दामोदर अष्टकम और दीप दिखाते हैं. हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं. Very simple puja, only just one giwek we offer, or one candle, whatever you have, you can offer. बहुत सरल पूजा है. एक घी कपास में डूबा हुआ घी का दिया या मिट्टी का दिया दिखाते हैं. जो भी आप दिखा सकते हैं भगवान को इस प्रकार अर्पित करते हैं. So all over the world we're doing this Damodara puja. तो पूरे विश्व भर में हम ये दामोदर पूजा कर रहे हैं. Thousands of people, hundreds of thousands, millions of people are taking part in this Damodara puja. हजारों लाखों लोग दामोदर पूजा में भाग ले रहे हैं. And
they're hearing about Krishna and this wonderful pastime. और वो कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं और इस अद्भुत लीला के बारे में सुन रहे हैं. You can see here the lamps burning. आप देख सकते हैं यहाँ दीप जल रहे हैं. So if you offer a light, it's also for your spiritual benefit. तो अगर आप भी दीप दिखाएंगे तो ये भी आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए. We say Krishna is like the sun and Maya is like darkness. So where there's the sun, where's the light, there's no darkness. तो कृष्ण हम कहते हैं कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है. जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं रहता. The Maya is overcome by the light. माया के ऊपर हम निकल सकते हैं रोशनी के द्वारा. Darkness is forgetfulness of Krishna and light is remembrance of Krishna. अंधकार है कृष्ण की विस्मृति और रोशनी है कृष्ण का स्मरण. So this month we're practicing remembering Krishna, remembering this form of Damodara. तो इस महीने हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को याद करने का, दामोदर रूप को याद करने. Now Lord Krishna is the supreme controller. He controls everyone. The Bhagavad Gita says, Krishna says, I am in the heart of everyone. So Krishna is controlling everyone, but Lord Krishna is becoming controlled by who? By Mother Yashoda. तो कैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सबके हृदय में है, वो सबको नियंत्रित करते हैं. लेकिन वो जो सबको नियंत्रित करते हैं वो यहाँ पर नियंत्रित हो रहे हैं किसके द्वारा? अपनी माँ यशोदा के द्वारा. So did you offer the lamp today? Yes. You already did? Yeah. Okay, good. आज आप सबने दिया दिखाया, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा. So there's a pastime about one man. One man, he never did any pious activities. He was just a traveler. He would travel around and he would do things like he would sell animal skin and he would sell horns from the animal. He would do things like this. So it happened one day he came to a holy place and it was the month of Kartik. इस प्रकार से इसमें कथा आती है कि एक व्यक्ति था, वो एक बहुत पापी व्यक्ति था. वो कुछ मंगल शुभ कार्य नहीं किया करता था. वो केवल इधर उधर जाता था और जानवरों की चमड़ी से जो कुछ बना होता था उसको बेचता था. तो एक दिन वो कार्तिक के महीने में एक बहुत ही शुभ स्थान पर आया. So in the month of Kartik he saw all the people, some were chanting and some were offering lights and some were bowing down and some were doing kirtan, and he didn't do anything, but he'd never seen people do all these things before, and he was looking and he was just watching them. तो उस व्यक्ति ने देखा कि इस कार्तिक के महीने में कोई लोग भगवान को घी का दिया दिखा रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं. तो ये व्यक्ति जो पापी व्यक्ति था ये कुछ ये कर रहा नहीं था, बस उन लोगों को देखता था ऐसे करते. So then it came to the end of the month, the end of Kartik, the last night. Everybody was breaking their vow. They were finishing the 1 month of austerity, and that one man, somehow he got bit by a snake that night. फिर वो कार्तिक का अंतिम समय आया, आखिरी दिन, और उस समय सब अपने व्रत को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, व्रत पालन करके खलास करने का. तो उस आखिरी दिन में किसी न किसी तरह वो व्यक्ति को एक सांप ने डस दिया. So the man got bit by the snake, he fell down, it was a deadly snake. The poison went to his heart, the man died. So Yamaduras came and they took him to Yamalok. तो उस प्रकार उस सांप ने उसको काटा, तो वो जहरीला सांप था. काटने के बाद वो व्यक्ति गिर गया, मर गया, और यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए. So Yamaraj asked, who's this man? What has he done? So they told Yamaraj.
He's a sinful man. He never did anything good. तो यमराज ने उनसे पूछा कौन है ये व्यक्ति, इसने क्या किया है? तो यमदूतों ने कहा ये बहुत पापी व्यक्ति है, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। So Yamaraj said, all right, take him to Kumbhipaka Loka. तो यमराज ने कहा ठीक है, इसको कुंभिपाका लोका में ले जाओ। You know Kumbhipaka Loka? कुंभिपाका लोका जानते हो क्या है? Anybody know? कौन जानता है? Kumbhipaka Loka is a hell. There's a big wok of boiling oil. When the sinful people get put into the boiling oil. तो कुंभिपाका नर्क में एक बहुत बड़ा मटका होता है उबलते हुए तेल का, और पापी व्यक्तियों को उसमें डाल दिया जाता है। So they took him, the Yamaduts took him, they threw him into the boiling oil. Now usually they put people in the boiling oil, but this man, they put him in the boiling oil. The oil became cool. It all lost it. It was not hot anymore. तो इस प्रकार उनको सजा मिली कि उसको तेल में फेंका जाएगा। जैसे उसको तेल में, उबलते हुए तेल में फेंका, तो आमतौर पर हम ऐसे किसी व्यक्ति को तेल में फेंकेंगे तो बहुत आवाज करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्या हो रहा है। लेकिन जब इसको फेंका तो कुछ आवाज नहीं किया और तेल ठंडा हो गया। The Yamaduts were shocked. They'd never seen this before. What happened? तो यमदूत आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा उन्होंने कभी पहले नहीं देखा, क्या हो गया? So then Yamaraj came, and Yamaraj came, and Narada Muni also came. And Narada Muni told them and said, you cannot harm this man. You cannot do any harm to him. फिर यमराज वहाँ आए और नारद मुनि वहाँ आए और उन लोग ने कहा आप इस आदमी को अभी कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचा सकते। That you cannot do anything because this man, during the month of Kartik, he didn't do anything, but he watched people do all the worship and do all the pujas. He watched people do all these different things to worship Lord Damodara. So he gets 1/6 of the benefit of all of their activities. नारद मुनि ने कहा कि इसने तो कार्तिक में कुछ नहीं किया, परंतु इसने औरों को ये सब कार्य करते हुए देखा, तो जो कुछ ये कार्तिक में कार्य दूसरों ने किए उसका 1/6 लाभ इसको मिल गया है। अब आप इसको नुकसान नहीं कर सकते। All their sins were destroyed. उसके पूरे पाप नष्ट हो गए। But Narada Muni, they said, anyway, he's come here to Yamalok, take him around, you show him, let him see all the hell. तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप कैसे न कैसे यमलोक आ गया है, थोड़ा उसको इधर घुमा लो, दिखा दो पूरा नरक में क्या होता है। And then after that, then Kubera came and Kubera took him to heaven, up to Swarg. और उसके बाद कुबेर आए और कुबेर को ऊपर स्वर्ग ले गए। And so this way the man got the benefit just by seeing people do all these things during the month of Kartik. इस प्रकार से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हुआ, केवल दूसरों को कार्तिक में ये कार्य करते हुए देखा। So very, very beneficial to do this worship during the month of Kartik. तो कार्तिक में इस प्रकार की उपासना करना बहुत बहुत लाभ देता है। Okay, are there any questions? तो किसी को कोई प्रश्न है? नाम जप करने के लिए कैसे सुधर सकते हैं? Practical tips for improving chanting. How to improve our chanting? More chanting. Want to improve your chanting? Do more chanting. तो आपको जप में सुधार लाना है तो ज्यादा जप करें। Practice makes perfection. अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होगी। You have to do more chanting. And it also helps to chant in the association of devotees who are serious chanters. अभ्यास से अच्छी जप होता है और
उन भक्तों के साथ संग करके जप करना है जो गंभीरता से कुछ जप करते हैं। It's also good to chant loudly. जोर से जप करना भी सहायक होता है। And to hear, to fix our mind carefully on hearing the sound of the mantra. और अच्छे से सुनना, मन को लगा देना भगवान के नाम सुनने में। It's also good to know the philosophy, to study the teaching, the science of the chanting of the holy name. अच्छा है जो भगवान के नाम के जप के पीछे जो विज्ञान है उसके तत्व को भी समझे। You have to consider yourself. What is your situation? How long have you been chanting? How much service have you done? Maybe you have to do more service. By doing more service, we develop more taste for chanting. तो हमें हमारी स्थिति समझनी है। हमें समझना है कितने समय से मैं जप कर रहा हूँ, कितनी सेवा मैंने की है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि अधिक सेवा करने से हमें और रुचि मिलती है भगवान का नाम जप। Hearing is very important because by hearing, then we'll get more taste for chanting. सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि सुनने से और रुचि मिलेगी। First is hearing and then we chant. पहले है सुनना और फिर हम बोलते हैं। And when we hear and chant nicely, then we can remember. और अगर हम सुनते हैं और अच्छे से जपते हैं तो हम अच्छे से याद रख सकते हैं। So there's a progression in the 9 stages of bhakti. तो इस प्रकार से ये क्रम है जो 9 स्थितियां हैं भक्ति की, उसमें आगे बढ़ने की। Right? Begins with Shravanam and then Kirtan, then comes Smarana. तो शुरू होता है श्रवणम से, फिर कीर्तनम से, फिर आता है स्मरणम। So you want to do better chanting? That's very good. You have to be very determined that you want to do good chanting. You have to keep that desire. Yet Prabhupada said it took him 32 years to perfect his chanting. तो आपको अच्छा जप करना है, ये बहुत अच्छा इच्छा है। आपको ये इच्छा को दृढ़ता से संभाल के रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको 32 वर्ष लगे जप को सिद्ध करने। So you have to be patient also. तो आपको सब्र भी रखना है। हिंदी में पूछ सकता है, उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दो राउंड की नाम लगता है, तो मन में लगता है। जब 2 राउंड की नाम होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में रुचि नहीं, स्टार्टिंग में राउंड करेंगे तो मन मार इधर उधर भागता है। जब इसमें पकड़ लेता है तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है और फिर दूसरा कोई काम नहीं करता है। दूसरा कोई इससे माला स्टार्टिंग करेंगे तो रुचि नहीं मिलती। जब 1 राउंड 2 राउंड हो जाता है तो अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तो बंद करके जब फोन आ जाता है कुछ भी आता तो फिर टूट जाता है। Maharaj is saying, when I start to chant my first 2 rounds, I don't feel any interest or taste. Gradually, when it goes to the 3rd, 4th round, I start liking it. And once I start liking it, I'll get a call or something, and then again everything will be fine. So turn off your handphone. आपका फोन बंद रखो जब करते। और इसके टाइम में रखता हूँ तो ठीक होता है। अच्छा फोन का काम कोई कर देता है, कोई कर देता है। फोन मारे बात नहीं रखी। You have to want to chant. If you don't want the call, turn off the phone. आपको जप करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको वो जो कोई आपको कॉल कर रहा है नहीं चाहिए तो उसको बंद कर दो। Krishna is testing you. कृष्ण आपकी परीक्षा ले रहे हैं। Do you want to chant or do you just want to chat? तो आप जप करना चाहते हो या चैटिंग करना चाहते हो? Okay?
chanting empty zone. No question. Empty. 18 participants. 18 participants, but empty. No question. No, because they can't answer. Okay. Recording stopped. Hare Krishna Maharaj. What we are doing daily or the fact, impressions are getting out. When you're chanting, you're very sad, or happy, sad or worried. I think impression will go तो वो पूछ रहे हैं मन में कुछ छाप लगा रहता है, कभी खुशी का, दुख का, ज्यादा दुख का छाप रहता है, चिंता का छाप रहता है, तो ये भी छाप के समय आता रहता है, इसको कैसे निकालें? Yes, impressions will come in the mind when we chant, but you have to focus your attention on the chanting. The nature of the mind is to wander, but you have to put your mind to concentrate on hearing the sound of the mantra. Don't hear the mind. Don't hear what the mind wants to think. Hear the mantra. तो हाँ, मन में जब करते समय छाप आएंगे, ये तो मन का स्वभाव है, लेकिन आपको ध्यान मंत्र पे लाना है. मन क्या बोल रहा है उसको मत सुने, मंत्र को सुनो. There will always be thoughts coming there in the mind. You must bring the mind back to focus on the chanting, to hear the mantra. हमेशा मन में तो विचार आते रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान लगाना है मंत्र को सुनने. This is the art of mantra meditation. ये मंत्र ध्यान की कला है. We meditate on the sound of the mantra, not on their mind. हम मंत्र की आवाज पर ध्यान करते हैं, मन पर नहीं. So many thoughts and impressions are there in the mind. You have to remove them all by the chanting. मन में बहुत छाप है, आपको इन सबको निकालना है जप से. So Chaitanya Mahaprabhu describes this in his Shikshastikam in the very first verse. He says, Cheto Darpana Marjana. The mind is like the mirror, and you have to, the mirror, if it's all covered by dust, you cannot see clearly there is anything in the mirror. तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में पहले श्लोक में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन. मन एक आईने की तरह है, अगर आईने में धूल हो जाती है तो आईने में कोई भी साफ नजर नहीं आती. Maharaj, we depend on mind to listen the sound and mantra. And again, we avoid mind and other things of others. How? You use the ear to hear the sound. You don't use the mind. But hearing is recognized by mind. Yes. So that's right. So use the mind to focus on hearing the sound of the mantra. Don't listen to what's coming up, the impressions which are coming from the mind. That's, you know, in the water, there's so many things in the bottom of the water. You stir them up, they come up. तो आप मन में ख्याल आते हैं, मन का उपयोग करो मंत्र सुनने में. जैसे जब पानी है उसको थोड़ा हिलाओगे तो बहुत कचरा जो होता है ऊपर आ जाता है. You have to get rid of these things, and the way to clean the heart by chanting. So loud chanting helps us to focus more on the chanting. तो इस प्रकार से हृदय में ये सब जो अनर्थ है इससे मुक्त होना है और इसमें जोर से जप करना सहायता करना. Prabhupada, sometimes people would ask Prabhupada what to do with the mind. Prabhupada would say, it's not a question of the mind. You use the tongue to chant and the ears to hear. तो बहुत बार प्रभुपाद जी को पूछा जाता था कि मन से क्या करें. प्रभुपाद बोलते हैं मन की बात नहीं है, आप मुंह से जपो और कान से सुनो.
So we get these impressions coming up. They come up into the mind. You have to put them down. You have to knock them back down. Don't feed them. Don't keep them. Don't hang on to them. You know, bring the mind back to the chanting. ये सब छाप आते हैं मन में, तो इन पे ध्यान मत करो, इनको फेंक मन को वापस जप में लाओ. This is the challenge. This is what every day we're conquering the mind, training our mind, conquering our mind. Every day we do battle with the mind. We have to conquer the mind. Just like you have to fight some wild animal. You have to. How do you fight an animal? If it's a wild animal, how do they train the wild animal? Huh? Right. Yes. They starve it. तो इस प्रकार से प्रतिदिन मन से ये संघर्ष करना है, उसको नियंत्रित करना है. हर रोज हम ये प्रयास करते हैं. मन पे काबू पाना, एक जंगली जानवर पे काबू पाना है. जंगली जानवर को कैसे काबू में लाते हैं, उसको पहले खाना नहीं देते हैं. They starve it, then they beat it. Then they feed it. उसको भूखा रखते हैं, उसको मारते हैं, फिर उसको खिलाते हैं. So how do we starve the mind? We get the mind. We get the mind to do what it doesn't want to do. The mind says, don't chant. The mind says, let's watch television. तो हम मन को कैसे भूखा रखते हैं? तो जो मन नहीं चाहता है करने को, वो हम करते हैं. तो मन बोलेगा वो जप नहीं करो, मन बोलेगा आप थोड़ा चलचित्र देख लो. Mind will say, well, we chanted yesterday, why we should chant again today? We've chanted enough. मन बोलेगा वो आपने कल जप किया है, आज क्यों जप करें, कल काफी जप कर लिया है. Mind will always be trying to take us away from devotion. मन हमेशा हमें भक्ति से दूर ले जाएगा. We have to beat the mind, get the mind to do the things it doesn't want. हमको मन को मारना है, उससे वो काम कराने हैं जो वो हमें नहीं कराना चाहते. Just like they beat the animal, they starve the animal, they beat the animal, then they feed it. Then the animal knows, oh, I better do what this person says. He's very powerful. तो जानवर को पहले भूखा रखते हैं, उसको मारते हैं, फिर वो जानवर समझता है और फिर उसको खिलाते हैं. फिर वो जानवर समझता है वो शक्तिशाली आदमी है, तो वो बोलता है अच्छा है मैं कर. So like that, we have to train the mind to become submissive, to become surrendered to the service of Krishna. इस प्रकार मन को नियंत्रण में रखना है कि वो मन हमारा शरण ले और कृष्ण की सेवा में लगे. It's a habit. We have habits, right? People have habits. Some people have a habit. They want to read the newspaper. Some people have the habit. They have to drink a cup of tea. Some people have habits, different habits we have. So we want to develop the habit to chant the holy name and to hear about Krishna. तो ये आदत की तरह है. लोगों को अलग अलग आदत होती है. किसी को आदत होती है अखबार पढ़ने के लिए, किसी को आदत होती है चाय पीने की. तो इस प्रकार से हमको ये आदत बनानी है कि भगवान का नाम जप करने का आदत है. So this month of Damodara is a good time to develop the good habits. तो ये दामोदर का महीना अच्छा अवसर है अच्छी आदतें बनाने के लिए. Try to do more chanting. ज्यादा जप करने का प्रयास करें. Try to do more hearing. ज्यादा सुनने का प्रयास करें. Try to do more service for Krishna. ज्यादा सेवा करो कृष्ण की. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. So we have some prasadam here for everyone. महाराज एक बार Hare Krishna